So hey, what's up? Yeah, as always, finally back again with another video, but after a long time of gap. But anyways, I don't want to give you any type of excuse, and I don't want to waste your time just giving excuses why I delayed so much. So let's just quickly focus on the main topic. So as you've seen in the thumbnail, today we're going to craft fox brush. Yeah, this one as you can see, and I have already done doing the preparations. But if you want to know how I have cut the cardboard pieces of fox brush, make sure to check out this video if you want to get a full knowledge or full tutorial on making a CX system Beyblade. As you can see guys, I already have fox brush. This is like my first time I'm crafting a Beyblade, but I already have it because in my previous time I mostly first crafted the Beyblade, then I bought the Beyblade. But this is my first time I already have the Beyblade and now I'm crafting it. So yeah, this is kind of weird. एक टाइप से बोलूँ तो भाई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया, क्योंकि तुम सब देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी भाई फॉक्स ब्रश Beyblade है. हालांकि ये फेक है, लेकिन फिर भी भाई इसका फेक भी रिलीज़ हो गया और अभी तक भाई मैंने फॉक्स ब्रश Beyblade बना ही नहीं. कुछ भी हो भाई, चलो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, जल्दी से भाई हमारा ये फॉक्स ब्रश बना लेते हैं. अबे यार ग्लू स्टिक भी डालना भूल गया. क्या? Just quickly stick each and every cardboard piece one by one, like the way I'm sticking. So here's the last piece, and here you go, our layer blade is done. Not done yet because we also have to do the shaping like the log chip, but for now we are just going to stick each and every cardboard piece for each part of the Beyblade. Then later on we'll do the shaping. अभी के लिए भाई बस सारे के सारे पार्ट्स का जितने सारा कार्डबोर्ड से वो लगा रहा हूँ मैं ग्लू से, उसके बाद भाई हम शेपिंग करेंगे. इसको हमको भाई सही तरीके से लगाना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई बाद में. इससे पहले मैं थोड़ा सा सुपर ग्लू डाल लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैं शेपिंग करता हूँ सोल्डरिंग आयरन से, तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ग्लू भाई बहुत जल्दी पिघल जाता है, और ये जो कार्डबोर्ड पीस में लगा के रखा है एकदम सही सलामत, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है भाई, यानी कि प्रेस पेन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. आई होप तुमको समझ में आ गया. तो मैं बस सुपर ग्लू दे के सब कुछ एकदम सख्त कर रहा हूँ. अब भाई बस सोल्डरिंग आयरन से अच्छी तरह से शेपिंग करके सब कुछ एकदम करेक्ट कर दूंगा. और हाँ भाइयों, हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो प्लीज़ भाई अगर तुम न्यू फिर इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी से. ये जो लाल कलर का या सादा वाइट जो भी हो भाई, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर उंगली दबा दो या बेलट फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से, ठीक है. क्योंकि जब भाई मैं शेपिंग करता हूँ तो मैं ऐसे भाई प्रेशर देता हूँ, ठीक है, ऐसे प्रेशर देता हूँ ताकि भाई कार्डबोर्ड अच्छी तरह से अंदर दब जाए. और इसी वजह से तुम सब देख सकते हो नीचे का कार्डबोर्ड और ऊपर का जो मेन टेम्पलेट है वो एकदम एक साथ एकदम सेम तरीके से लग जाता है. इससे भाई Beyblade देखने में और भी ज़्यादा एक्यूरेट लगता है. आई होप तुमको समझ में आ गया. देखो भाई, वो मैं उतना ज़्यादा अच्छा कोई एक्सप्लेनर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. बाकी तुम्हारे ऊपर, अगर तुमको समझ में नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, समझ गया. As you can see, fox brush really has 3D looks, especially on this side, this huge blade of fox brush. So yeah, we are also going to add some 3D looks on the crafted one, I mean the cardboard version of fox brush. So this time we are just going to use our fingers. Just do the same as I am doing in the video. Just push the blades upwards using your thumb like this. अपनी इस उंगली को यूज़ करो और बस ऐसे बस भाई ऊपर की तरफ पुश करो, हो जाएगा भाई 3D लुक्स. ये ऑप्शनल है भाई, कार्डबोर्ड Beyblade बना रहे हो तो ये 3D लुक्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट एक्यूरेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो दे देना भाई अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, 3D लुक्स के बिना भी भाई चल जाएगा Beyblade, ठीक है. हालांकि मुझे तो लगता है भाई ये वाला Beyblade काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होने वाला है, क्योंकि इसका रियल वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है मेरे लिए. काफ़ी हद तक भाई टायरोनो बीट जैसा है Beyblade इसका. तो पता नहीं भाई ये कार्डबोर्ड वाला कैसा परफॉर्म करेगा, ये तो भाई पूरा बनाने के बाद ही पता चलेगा. Okay, looks pretty good. So yeah, the access plate is almost done as well, but after shaping we have to add some super glue because this is made out of cardboard. So just to harden the cardboard we are going to use super glue, and then it will kind of feel like plastic or pure metal. देख सकते हो भाइयों, एकदम ठक ठक सा आवाज़ आ रहा है. तो हाँ, कार्डबोर्ड एकदम हार्ड हो गया, और इससे भाई 3D लुक भी एकदम परमानेंट हो जाएगा. बार बार भाई अपनी उंगली से ऐसे कार्डबोर्ड को ऊपर की तरफ दबाना नहीं पड़ेगा. ओके, आई थिंक आई एम डन. एसिस प्लेट में मैंने थोड़ा सा हल्का पतला शेपिंग दे दिया,
यानी कि 3D लुक्स। ठीक है, तो इसके वजह से देख ही सकते हो मेन प्लेट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से फेस कर रहा है, आई मीन प्लेस हो गया है, देख सकते हो। तो देखते हैं भाई लॉक चिप सही से लगता है या नहीं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो पूरा बाकी जो हिस्सा है भाई बेब्लेड का वो होल्ड करेगा। एंड या भाई एज एक्सपेक्टेड ये तो भाई हमेशा मेरे साथ होता है। तो हाँ, हमको थोड़ा सा भाई यहाँ पर काटना होगा, क्योंकि तुम सब देख सकते हो भाई वो लॉक चिप नहीं लग रहा है। या गाइस एज यू कैन सी द लॉक चिप इज़ नॉट लॉकिंग बिकॉज द शेप इज़ इनएक्यूरेट। सो ओके, आई थिंक इस पर भाई फिट हो जाएगा। आई थिंक हाँ भाई लॉक चिप तो सही सलामत एकदम फिट हो गया, देख सकते हो। अब देखते हैं एसिस प्लेट। ऑल राइट, फाइनली वी आर डन विद द मेन प्लेट। हियर यू कैन सी गाइस, फुल्ली डन। The layer base is now fully done. Still we have to do some coloring, you know, but we will do that later after making all the parts. But we just need 3. This one will be for the bed. Okay, so the ratchet is also done, but yeah, as always we have to do the shaping as well, just to give some accuracy like the real one. Although there is no like 70 height on the ratchet, just a normal 9 ratchet, that's all. Okay, let's just quickly do the shaping. Okay, I'm also done doing the shaping on the ratchet. Yeah, I know this ratchet is looking pretty thin, but no problem, bro. At least if the Beyblade will perform well, then that will be enough for me. So no problem, still the ratchet is looking okay to me. Now finally we have to make the bed, which is actually low gear flat. So let's just quickly make it. Okay, so we are just going to use the cap of the pen, because this part, as you can see, it's actually pretty much similar to a bed. So now we will turn this into a low gear flat. Okay, here we go. Let me know if it's looking like a gear low flat or not. Now finally we just have to add this circular cardboard piece like this, and then just add some super glue, and here we go, our low gear flat will be ready. Alright, so here's all the parts of our crafted fox brush made with cardboard, and here's the lock chip. Let me know your thoughts in the comments. Tried my best to make it look as much accurate I could. And here's the brush blade of fox brush. Kinda messed up because as you can see, when I was adding the purple color, the color just sprayed on the main tablet as well, which is just really making the blade looking a little bit worse or dirty. But still, no prob, with little bit of 3D looks. Okay, and here's the ratchet 9. Not with 70, 60, I don't know what's the height, but it's just a 9 ratchet. Okay, and finally here's the low gear flat bit. Look at that, fully flat. Alright, so now let's just quickly assemble our fox brush together. Alright, so after placing all the parts together, here's our fox brush Beyblade fully assembled. Let me know your thoughts in the comments. And yeah, I just kind of got messed up with this Beyblade because as you can see, I don't know, but the lock chip is looking kind of like purple. I think it's because of the color that I was having on my fingers. Sorry guys, I just forgot to wash out my hands. Anyways, here's the real one, as you can see. Let me know which one is looking better. Definitely the real one, but still let me know. As a cardboard Beyblade, I think it's okay to me. Yeah, from the front side looking pretty accurate, but if you give a good look from the side, you can clearly see there's a huge difference between the crafted one and the real one. I hope it will perform well. 3, 2, 1, let it rip. Okay, not bad. But yeah guys, definitely fox brush is very unstable. And yeah, the stamina is getting low very quickly.
Alright everyone, I can't continue anymore because I think I have to make some new launchers because these launchers are now fully trash. Guys. Oh crap. What are you waiting for? Do it!